Hello. Hello, guys. Okay, so I'm live. Okay, guys. Good evening, good evening, good evening to everyone. So let me see if anyone is who has joined. So let us wait for a while. Good evening, everyone. So still we have 1 minute to go. So I thought I will set my things and then we can go fully, or my healing bell. So this is my healing bell, which happens after every half an hour. So this reminds me to take a little break from your day-to-day activities just for a second. I think it was not even a second, and that sometimes I am into the like you are into some kind of a different state, and it changes your state. That bell gives you the ring ki bas ho gaya. Okay, guys, so it's 5:30 now. So good evening, welcome to this platform once again. And so before I start, as usual, I love the rhythm in the life, and today I'm going to tell you what this rhythm is all about. So before we go ahead, I would like to ask you whether I'm visible, I'm audible. Let me type. Am I visible, audible? So let me see if I'm visible and audible. If you can just reply me, message me, then I think I can continue. In the meantime, let's listen this song. Yes, guys. So, how many of you like this song? Just type it in the comment box. How many of you like this song? Minnie, yeah, visible and audible. Thank you so much. Thanks for joining, Minnie. So, that's wonderful. And so, this is a beautiful song, which I love it. And I will tell you why I made you listen this song. So before that, let me welcome you guys. So welcome to this magical evening, and today we are going to explore the genius within. So how many of you are ready to explore that genius within? Are you ready, guys? So if you are new to this platform, hello to you. And if you are recurring frequent listener or viewer and watcher of my weekly lives every time, welcome back to Chai Par Charcha. So it's the confession box, which is a kind of a talk therapy where we talk about the actual experiences we face daily. Okay, guys. So now I must tell you guys that there are these are, as I every time tell, that these are kind of a free mini workshops. So just make use of these workshops, So create a lot of notes, keep your pen and the pencil with you, and create the notes, because you never know which idea, which things you really love it, which you really love it, and use it in your daily life. Okay, guys. So before we go ahead, let me introduce myself. Namaskara. My name is Vandana, and lots of people call me Vindi Kohli as well. I'm a life designer, and I'm a healer and also your accountable partner on this holistic well-being journey.
So I would like to tell you that why I'm doing what I'm doing. That's really important because I really wanted to create the army of divine mothers. So why I say divine mothers and why I'm saying mothers and that also divine, because I feel the mothers have power. I believe that mothers have power to change the world, because the mother are emotionally quite stronger, within, because being a mother, I know that what mothers are going through in lot of things. So due to many challenges, the world itself is out of balance, isn't it? Emotionally अगर आप देखो, mentally देखो, physically देखो, कितनी illness आ रही है, रोज virus कोई ना कोई, people are not maintaining the proper health. And so once when the mother of the house is like conscious about certain things, has consciously worked on herself, her limited beliefs, and strengthen them, then they will be able to, what they can do, that they can able to indulge those beliefs and those values, those traditions in their children. Yes or no? And then they can create a happy home. So harmony is always in the women's hand most of the times. I'm saying not every time, but like if you see like percentage wise, yes. So 99% I believe so. My mother used to say, my mama used to always say कि okay, ये program हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, so we will connect. So my mother used to say कि घर की औरत ऐसी आती है कि या तो वो घर को स्वर्ग बना देती है या वो घर को नर्क बना देती है. And I never used to understand that, and now like as I'm growing to that state where my mom was, and I'm understanding she's right. Yeah, because अगर घर में कुछ हो जाता है, so it is sometimes up to me to keep quiet and to ignore certain things so that the peace of the peace I should maintain at home, the peace, right? So the mother have maximum patience, and this patience only bring that balance, compassion, resilience, and sometimes the resilience should come within first, isn't it? Then only you can proactive outside, and resilience comes with lot of things, with lot of acceptance, and this is a journey. Resilience के लिए आपको एक journey पार करनी पड़ेगी, and that's how you can create the harmony around it. So how many of you who are there right now watching, are you with me on this mission? Do you think it is powerful? Do you think what I'm talking is powerful? Yeah. So if you can just type it in the comment box, that would also inspire me, guys. So I also want inspiration at times when you guys reply, when you like my sessions. It is also inspiration to me. Okay, what can I do something better? What can I do something more for it, right? So it is, yes. Thank you, Minnie. Thanks for replying. And guys, if you have missed the last 3 sessions, like live sessions, which is on, I think it was on 26th, then 29th. After 3 days, we had on first Wednesday, then Sunday, then we had last Sunday on 3rd November. Then please, after this session, please see the recordings, because that is very important for you to even connect this session with that, because that's the entire science I have shared with it, that how the law of attraction manifestation work in our life, right, guys? And anyone who is there from past almost 3 or 4 sessions, if anybody is there, can they just type in one line what is your experience for those sessions? Just one line. And if you have any questions also, I'm ready to take your questions before we even start our topic of the day. So not necessary that every time I'm going to talk about the topic what I actually create for you guys. Definitely those topics are extremely powerful, but sometimes when we address the questions or when we address the challenges of the people, we actually get to know and get to solve a lot of things. Are you getting it? Are you ready with me on this? Do you think what I'm saying is making sense? So just type making sense if you think. If you do not think making sense, then just say no, not making sense. Okay, guys. So please type your name and who has joined, because in this there is a thing that in phone I can see that who's joined, but sometimes on this laptop I'm unable to see who's joined, because it's only if someone messaging I can only get to know the person is joined, but otherwise I will not get to know who has joined.
Okay, guys. Right. So some of them are right now live, and some of them may be seeing this session later on recording. That time also, whenever I'm asking you to type something or comment something, please do that, because I always say, अगर आप जुड़ना चाहते हो और अगर आप बदलना चाहते हो या शिफ्ट लाना चाहते हो, तो you have to be involved with the process, you know. So once when you are writing or you are typing something, it is going into your muscle memory and you are remembering. Okay, guys. So before we go ahead, let me see if anybody has replied. Deepak. Hey Deepak, how are you? Thanks for joining, Deepak. This is a and I'm so glad that you got a time today on Sunday to join. Thank you everyone, because I know Sunday is a family day, and today for me also, like, it's such a special day. My children are outside sitting because I requested them, please give me half an hour for this live, because I have committed and I have to show up. So when I commit something, I need to show up. Right? So that is what I am taking the commitment with you guys. When I say something, then I have to do it. So today, in fact, I have a flight. I'm going to meet my daughters. So in the midnight, I have a flight, but still I thought ki before we have a long gap, let me connect with you. Okay. So today our topic is about that awaken the inner genius within, you know. So inner genius कौन है? कोई बताएगा chat box में कि मैं यहाँ पे किसको address कर रही हूँ? Inner genius. When I'm saying awaken the inner genius, what do you understand? Let me see how many of you reply. What do you understand about that inner genius? So please guys, come forward and type, because as I said ki I will also feel nice if somebody is there and listening and replying, then you are connecting better, isn't it? So what do you mean by inner genius? When I'm saying awaken the inner genius within, so what do you mean by this? Who can be the inner genius? If you know, just type, otherwise say curious to know. Otherwise just write curious to know. CTK, simple लिख दो, CTK, okay. Our inner strength at subconscious mind, okay, right. So what else? Anybody else can type here? Anybody else can type here? So guys, inner genius, when I'm talking about you. So before I go ahead with it, let me ask you a question. Okay, are you aware of taking a breath at this moment? आपको पता है कि आप सांस ले रहे हो? Yes or no? Just type in the comment box. आप सांस ले रहे हो इस टाइम पे? Yes or no? Please type. Minnie, Deepak, if you are there, please type. So हमें पता है कि हम सांस ले रहे हैं, but हमें नहीं पता है कि हम सांस ले रहे हैं. Getting my point here? I know I am breathing. That is a continuous process. But am I aware of that I am breathing? I may not. Right? When I'm saying, you might say ki yes, you are aware of. But we are not aware of every moment when I'm breathing. Because breathing is the continuous process जो चलती रहती है. हमें पता भी नहीं चलता हम लोग दिन में कितनी बारी सांसें लेते हैं. Correct? So कुछ सांसें हमारी unconsciously चलती रहती हैं. और कुछ सांसें अगर हम सोच के लें तो वो हम consciously लेते हैं. With the awareness. Isn't it? So let's understand कि from where this awareness coming from. ये awareness आ कहाँ से रही है? कहाँ से आ रही है? कोई जना जवाब देगा इसके ऊपर? Yes. Okay, Sangeeta. Nice to see you, Sangeeta. So good. I'm glad so many people have joined today. So tell me कि awareness कहाँ से आ रही है? कोई बता पाएगा इसको कि awareness कहाँ से आ रही है हमें कहाँ से awareness आ रही है? So awareness is coming from mind, guys. You know, dimag, mind. Brain is separate, mind is separate. That's again new class. We will take on that. But right now, I'm only going to concentrate on one thing, and I wanted you to work on it. At the end of the day, I will give you the
home play also to work on yourself, and then next week we will meet up, and then I'll ask you that what has happened in this week's time. Isn't it exciting? So at the end of the day, अगर मैं आप लोगों को आज बोलूं कि मैंने आपको आज जिनी दे दिया, oh Ginny, yes, come and fulfill Sangeeta's wish, fulfill Minnie's wish, fulfill Deepak's wish, whosoever is there right now. So if I'm going to give you some kind of a tool, would you feel happy? Yes or no? Just type Y or whatever. Type anything. Type, because typing, as I said, it will go to your muscle memory. You will remember. Right, guys? So awareness comes from the mind. So mind is the main driver of our life. So whatever direction we give to our mind, to our body, you know, that body क्या करती है? Body follows those instructions. And your body is just like a slave. Whatever your mind says, your body does. So mind is a master. So now I am telling in front of you that, okay, fine, do this, do this, do this. So what are you doing? What are you doing? Okay, yes, ma'am. Deepak is saying, yes, ma'am. So what are you doing? You are following the instructions, right? Similarly, when my mind says something, my body follows those instructions, right? So today I'm going to talk about that what are the consciousness, what are the things we are consciously doing with full awareness? What are the things we are unconsciously doing? What are the things which is like in between, a bridge between both of them? So excited? Excited, guys? Do you want to go deep into it? If you say yes, then only I will go ahead. Just tell me, do you want to go deep into this session? Are you enjoying this session? Yes or no? Yes or no? Yes. Okay. Okay. Thank you. Thank you. So see, this is not a workshop. This is the eye-opening sometimes sessions. These small sessions are sometimes eye-openings. Sometimes we are looking for some kind of answers in our life, you know, but we don't know how to get those answers. We knew certain things within our head. हमें पता होता है हमें क्या चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता होता उसको एक्सेस कैसे करना है. तो कई बार क्या होता है, ऐसे सेशंस, छोटे छोटे सेशंस में क्या होता है, आपको समझ में आ जाता है ट्रिक कि ओके मुझे कैसे एक्सेस करना है. सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू, मे बी इन दिस टॉक, प्लीज बी विद मी कि इन दिस टॉक मे बी आई विल से समथिंग लाइक दिस, यू विल गेट योर आंसर. यू नेवर नो, यू नो. ऐसे ही मेरे साथ होता था जब मैं अपने सेशंस पे जाती थी कि भी किस तरह से मैं मेरी लाइफ में चेंज आ रहा है, या मेरे बिहेवियर में चेंज आ रहा है, या मेरा एटीट्यूड बदल रहा है, बिकॉज आई स्टार्टेड गोइंग ऑन दीज सेशंस विद फुल हार्टेडली. यू नो, ये नहीं कि मैं कुछ और कर रही थी और तब मैं एक फोन पे स्क्रिबल कर रही हूँ और सुन रही हूँ. आई एम डेफिनेटली नॉट प्रेजेंट देयर. So be with your 100% presence, be with your full awareness. Then only you will understand this session in the last कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं. Yes, guys? समझ में आ रहा है? Yes or no? So we are talking about here 3 kinds of mind, which is conscious mind, subconscious mind, and the unconscious mind. So conscious mind is जहाँ पे आपकी active thinking काम करती है, जहां पे आपको रीजन करना, डिसीजन बनाने अपनी लाइफ के, those things comes into your conscious effort. Like it is like full awareness, full your attention, full your 5 senses are active. And unconscious mind, where your 5 senses are inactive. You do not know when are you breathing, when are you eating, what are you seeing, what are you hearing, what are you feeling. You are not aware of. That is an unconscious part of it. And conscious part of it कि मैं आपके सामने चाय पी रही हूँ, कप पकड़ा हुआ है, मैं स्क्रीन को खोल के आपके सामने बात कर रही हूँ. क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? Do you have any questions still here? Are you clear? Shall I go ahead? Right, guys? So basically the conscious action, whatever we are doing, is like when you are aware of your body. You know, you are aware of at this moment what is happening in your body. अगर आप जॉगिंग कर रहे हो, बैठ के मेडिटेट कर रहे हो, या फिर सांस ले रहे हो, you are aware of that breath. You know, you are aware of that what your body is thinking, feeling, all those things. And unconscious efforts are those, please be carefully listen this, कि what is my unconscious. अगर आज आपकी लाइफ में कुछ चीजें सही ढंग से नहीं हो रही हैं,
फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ पीपल है फाइनेंशियल इश्यूज, अगर मुझे फाइनेंशियल इशू आ रहे हैं या मुझे हेल्थ इशू आ रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हेल्थ एज वेल, यू नो, और रिलेशनशिप इश्यूज आर देयर. सो वो कहाँ से आ रहे हैं? वो अनकॉन्शियस आपके लेवल से आ रहे हैं. अनकॉन्शियस जो मेरे 5 सेंसेस के दौरा के दायरे में नहीं है, यू नो. सो दोज एफर्ट्स आर लाइक रिप्रेस्ड फीलिंग्स, जो आपकी दबी हुई भावनाएं हैं, जो आपकी कुछ हिडन मेमोरीज हैं, यू नो, जो मेमोरीज याद ही नहीं है, वो बचपन में कहीं हुई थी, चाइल्डहुड में, बट यू डू नॉट रिमेंबर, इट इज जस्ट स्टक इनसाइड. maybe your some kind of a habits, your thoughts, your desires, your some of the reactions also, you know, whatever you do it. कि sometimes कुछ चीजें ऐसी होती हैं आप intentionally किसी को react नहीं करते, but unintentionally आप react कर जाते हो. होता है ऐसे? कितने लोगों के साथ होता है कि कभी कोई conversation हुई और आप कुछ और बात करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि आप वो फटाफट आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया कि अगले बंदे को फील हो गया, एंड देन आप भी रियलाइज कर रहे हो लेटर ऑन, oh my god, I never mean it, you know, I never wanted to do that, but I have done it. Are you, any of you have experienced that? Any of you have experienced, then type it in the comment box if anyone has experienced that, me or whatever. Let me see if you can feel that, right? So बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है. एंड यू नो so especially the memories and emotions जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल, एंड समटाइम्स embarrassing also, sometimes quite shameful और distressing. So वो वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमें फेस करना, हमें समझ में नहीं आता उन चीज़ों को हमने फेस कैसे करना है. वो क्या करती हैं, वो चीज़ें जाके एक रेजरवॉयर की तरह हमारे इस अनकॉन्शियस माइंड में दब जाती हैं, यू नो, डाउन द लाइन. वो डाउन द लाइन चली जाती हैं, एंड we are not aware of those feelings maybe, but don't remember. Yes, Sangeeta, nobody remembers that. So we are right now talking that part of a mind which we do not remember, you know. So we are right now, I am making you aware of कि हमारे पास एक माइंड नहीं है जो आप बैठ के आपको मुझे सुन रहे हो. That is not the only mind. इसके पीछे 2 और माइंड काम कर रहे हैं, 2 मशीनें और काम कर रही हैं. हमें उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है. Unless I understand those things which is working behind the scenes, I will never perform on the front. Getting it? I will never perform on the front. I will only perform on the front when I know मेरी foundation में क्या है, you know, what is there hidden, what is inside it. Getting it? So we have to understand those feelings. And today, whatever your behaviors, as I said, your hidden behaviors are due to those unconscious acts or unconscious hidden suppressed emotions, or anything you can say, you know, some kind of a hurt or shame or whatever. You know, there are a lot of incidents happens in the life. If you are connected with me and I am coming live every time, or I am doing a lot of videos, I have shared many times my childhood fears, you know, childhood where I felt that I unconsciously gone into the self-doubt. So कितने लोग हैं जो self-doubt में चले जाते हैं, confidence नहीं है उनको कुछ करने का, मतलब confidence ऐसे बहुत है, लेकिन जब कोई performance के टाइम आता है तो लगता है कि confidence नहीं है. कितने लोग हैं इस चीज को समझते हैं? Let me see. If you are typing, then we can go a little deeper into this subject, right? So the unconscious mind is the deepest layer where our deep-seated beliefs, you know, this is what I am going to talk about today, that beliefs, हमारे बहुत सारे deep-rooted beliefs होते हैं, बहुत सारे डर हैं, fears are there, and sometimes desires which is not fulfilled are reside in that unconscious state. वो unconscious mind में reside कर रहे हैं, इस time पे बैठे हुए हैं. So it is often inaccessible to the conscious mind, but influences behavior and emotions. You know, we really need to understand that you cannot access that unless you are conscious about it. There are deep down lot of things are there which is you are unaware how to access those things from your system, and that is only influencing your behavior and your emotions today.
Getting it, guys? So maybe today's topic will go a little deeper and कुछ लोगों के शायद above में जाएगा. That is why I am trying to connect with you in Hindi also in between, because I wanted you to understand this is a little deeper subject, but it is a very powerful subject. Once when you understand, you know how to change your life, how to bring the desired results into your life. Getting it? Are you there till here with me? Just type me here. And just say, okay, I'm enjoying, so I should know that you guys are enjoying and I need to go a little more deeper. Right, guys? So now let's come to the main thing, which is a subconscious mind. So what is subconscious mind? What is subconscious mind? Anybody can type here. What is subconscious mind? So guys, subconscious mind is a bridge. Yes, me, I'm enjoying. Thank you, Deepak. Thank you. And Deepak, I tell you, not for the heck of it, but if you are taking this session quite seriously, I'm sure there is going to be a lot of change in your own behavior over the time. And next week we will connect and we'll understand that how that behavior and how that thing has happened into you. So before I go ahead, my watch is showing 555, and as you know, if you are following me, I am fond of numerology and I believe in this. This is a universal numbers, and these numbers are the sometimes signal to you that where are you going, what are you doing, right? So please remind this number 555. So we will talk a lot on this as we are going ahead on these sessions. So subconscious mind is a bridge between your conscious state and your unconscious state. Okay, so it is responsible for automatic functions and stores our memories, our beliefs and past experiences. So whatever is happening today with me, it is, and my reactions are because of my subconscious mind, because subconscious mind is having a power from taking, because subconscious mind has an access to go to the unconscious state, and the subconscious mind has an access to bring into the consciousness, the real consciousness. So I actually do not know how to share here, which I was thinking of practicing, but I forgot. So if you have, anybody has seen iceberg? Anybody has seen iceberg here? So till the time you reply, so I will tell you कि as I said, that it is a bridge between both the things. So conscious mind, जैसे कि मैं आपको simple way से बताती हूँ कि conscious mind is the day to day things जो आप करते हो अपनी life के अंदर, कि day to day decisions लेने, आपको क्या खाना है आज, क्या conversation करनी है आज, these are all conscious mind की daily routine में आप conscious mind को कैसे use करते हो. Subconscious mind runs automatically, जैसे कि गाड़ी चलाना. कितने लोग हैं जो गाड़ी पे बैठते हैं और उनको पता नहीं चलता कि वो अपने घर से निकल के अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं? कितने लोगों के साथ ऐसे होता है? कितने लोगों के साथ ऐसे होता है? Tell me. Yesterday I was talking on some subject and my partner in my company, he said his house is some 45 minutes from here, and he told me, he says, Vanna, you know what happened? When I sit in the car and after 45 minutes I reach home, and I didn't even know which turn I have taken, which road I have taken, because other day we were going somewhere and we were crossing his road, his wherever his house is, and he was unconsciously turned the car to the left where we were supposed to go straight, and then he suddenly said, oh my god, I have come wrong. And that time he was telling me कि मुझे पता ही नहीं चलता जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ मैं कब अपने घर पहुंच जाता हूँ, और जब मैं घर से ऑफिस आने के लिए बैठता हूँ मैं कब अपने ऑफिस पहुंच जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता. कितने लोगों के साथ ये ऐसे होता है कि आप अपनी एक्टिविटीज में इतने एनग्रॉस्ड होते हो, अपनी कॉन्शियस एक्टिविटीज में, कि आपको पता ही नहीं चलता आपको गाड़ी भी चलानी आती है, कि कैसे आप गाड़ी चलाकर चले जाते हो, कहाँ राइट लेफ्ट लेना है, आप कॉन्शियसली नहीं लेते लेकिन अनकॉन्शियसली जाता है. यस और नो? इट हैपन्स. यस, so it happens. Thank you, Sangeeta, for your reply. So this is what is the conscious mind work. So you should understand कि मेरा conscious mind, subconscious mind कैसे work करता है. So subconscious mind बहुत सारी चीजें automatically करता है. जब आपने पहली बारी गाड़ी सीखी होगी, आपने consciously effort किया होगा कि गियर कैसे चलानी है, ब्रेक कैसे लगानी है, एक्सीलेटर कैसे चलना है, करेक्ट. बट अभी वो आपकी डे टू डे लाइफ में आ चुका हुआ है, आपके सिस्टम में चला गया हुआ है, और बिकॉज आपके सिस्टम में जाने से आप उसके ऊपर एक्शन ले पा रहे हो.
जो आपको सोचना नहीं पड़ता और आप कर देते हो। सिमिलरली शू टाई करना, पहली बारी मैंने जब टाई किया तो मैंने सोचा होगा कैसे करना है, मेरी मदर ने सिखाया, सब कुछ किया। अब क्या होता है, बात करते करते शू टाई हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्शंस हैं जो हमारी लाइफ में अभी हम लोग अनकॉन्शियसली करते हैं। करेक्ट? यस और नो? आर यू गेटिंग इट? आर यू एंजॉइंग इट? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट. Just tell me, are you enjoying it? Just type, yes, I'm enjoying, or me, or whatever, or smiley. Just give me a smiley, guys. कुछ तो दे दो, कुछ तो बोल दो, कुछ तो बोल दो, so that कि आगे बढ़े हम लोग, right? So, an unconscious mind क्या होता है? Unconscious mind is which is your suppressed emotions. Yes, I'm enjoying. Thank you. So, unconscious mind influences the deep-seated emotions and reactions. So, even जब आप लोग मतलब aware हो या ना हो, you know, okay, thank you Sangeeta for your response. So as I said कि conscious mind is कि जो आप regular routine में कर रहे हो, आपके day-to-day decisions, day-to-day things. Again, my healing bell. So this is my healing bell which comes after every half an hour. I just take one breath at that time. That's it. That is only important in that half an hour में. So subconscious mind आपकी automatic thoughts हैं. अब unconscious mind क्या है? Unconscious mind आपके hidden treasures हैं, जो आपके डर हैं, आपकी कुछ fears, आपके डर हैं, आपकी कुछ suppressed emotions हैं, आपकी कुछ जो आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो या आज आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता है वो बचपन में कहीं ना कहीं पे somebody has pulled you down, certain kind of things, those all things are down under the unconscious mind, guys. Getting it? So unconscious mind is like if you have seen the iceberg देखा है कभी किसी ने? Iceberg is कि जहां पे आधा वो ऊपर होता है और नीचे ऊपर 1/4 इंच होता है और नीचे 3/4 होता है। तो जो नीचे 3/4 में अगर मैं आपको आइसबर्ग का वो ग्राफ अगर मैं आपको ऐसे वर्बली बना के दूं, अगर आप विजुलाइज करो कि ऐसे आइसबर्ग है और पानी है नीचे, तो नीचे का जो हिस्सा है वो अनकॉन्शियस माइंड है। जो सेंटर वाला हिस्सा है आधा ऊपर और आधा नीचे, इतना ऊपर और इतना नीचे, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड विच इज अ ब्रिज between your unconscious mind and your conscious mind, and the top portion is your conscious mind. So remember the iceberg always when something happens, कि अगर आपकी लाइफ में आज कोई प्रॉब्लम आ गई है या रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है या आपका फाइनेंसेस आर बिकमिंग मेसी, और या फिर बच्चों के साथ रिलेशनशिप खराब हो रहा है या कहीं भी आपको कोई इशू आ रहा है हेल्थ वाइज, तो ऑलवेज टेक अ ब्रेक एंड थिंक अबाउट इट, टेक अ पॉज कि कहीं पे मेरी कुछ अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं जिनको मुझे एड्रेस करना है। ऑलवेज थिंक अबाउट इट, यू नो, बिकॉज अंडर द वाटर जो भी है वो दिखता नहीं है, लेकिन अंडर द वाटर वो है। इफ इट इज देयर देन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू इफेक्ट योर कॉन्शियस स्टेज, बिकॉज फाउंडेशन वहीं से आ रही है। तो अगर मेरी फाउंडेशन में क्लैरिटी नहीं है, मेरी फाउंडेशन की मिट्टी क्लियर नहीं हुई है, मैंने वहां पे हीलिंग नहीं की है, तो वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो वापस से ऊपर आता जाएगा। तो मुझे वापस से अपने अंदर रूट्स में जाना है, नीचे जाना है और अपनी हीलिंग को सोचना है और करना है। गेटिंग इट गाइस? अंडरस्टैंडिंग? आर यू एंजॉइंग इट? समझ में आया है? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? Any questions, guys? Any questions here? Yes, no? If you say something, then I will go ahead because I know it is very powerful what I'm talking about, and it is a very, first of all, I would like to tell you this is a very big subject. Like sometimes in my paid workshops and in my webinars, I take almost 3 hours to discuss this particular subject. Okay, so Deepak, you want me to repeat that? So Deepak, मैं क्या बोल रही हूँ कि हमें ये देखना है, आपने आइसबर्ग देखा है, मैं आइसबर्ग के बारे में बता रही हूँ कि आइसबर्ग में 3/4 वो नीचे होता है, पानी का आइसबर्ग. लेट मी सी इफ आई कैन टेक आउट द पिक्चर ऑफ आइसबर्ग from my phone and let me show it to you.
let me see if I can able to, let me see if I have something to share it with you. I'm sorry. Okay, let me just find out from my phone. Iceberg of, आप अगर Google करोगे you will get it, iceberg of mind. So what will you get? So there is a, okay, so there is a, okay, images. Yes, I got it. Yes, guys. So this is the iceberg. Yeah, this is the iceberg. So this is the iceberg. Can you see the iceberg? So this is a proper lesson I am taking. It is the proper webinar I am taking. So if you see कि नीचे वाले हिस्से में आप देखिए कितना हिस्सा नीचे और ऊपर कितना है. This is how our unconscious mind की activities. अगर आज मुझे results नहीं मिल रहे जो मैं चाहती हूँ, वो because of ये जो नीचे मेरा mind है, जो मेरा नीचे जो मेरा अनकॉन्शियस माइंड है, अगर आप देखो तो अनकॉन्शियस माइंड जो नीचे है वो मुझे चीजें जो है वो नहीं करने दे रहा है. गेटिंग इट? सो वी नीड टू रियली वर्क हार्ड टू अंडरस्टैंड कि फ्रॉम वेयर दोज थिंग्स आर कमिंग अप, कि क्यों मेरी लाइफ में चीजें सही नहीं ढंग से हो रही हैं, बिकॉज देर आर सम काइंड ऑफ अ सप्रेस्ड इमोशंस और सप्रेस्ड फियर्स और सम काइंड ऑफ अ रिग्रेशंस आर देयर डीप डाउन which is not helping me today. and आज कोई भी मैं जब डिसीजन लेने जाता हूँ या जाती हूँ, वो वापस से मेरा डिसीजन फुलफिल नहीं हो पाता है एंड फिर से मैं फ्रस्ट्रेटेड घर आता हूँ या आती हूँ बिकॉज ऑफ दैट रीजन. गेटिंग इट? So now we will continue this session in the next session as well. If you want, if you like it, please do type it in the comment box that I like it. So today I'm just going to give you that how you can integrate all these three things right now for this particular week. By the time we will meet next week, we'll continue this session with something more deeper into it. So till the time I wanted you to understand how you can integrate all these three healings and how you can manifest it in your life. Do you want that, to do that? Yeah? Do you want me to tell you that how you can integrate? So how you can integrate is that to manifest your desires and you heal your repressed emotions, first of all you need to align yourself, consciously, subconsciously and unconsciously. It's very important. You need to align that. So how you can align that? If you can just take out your pen and a pencil, please write it down. If anybody is replying, let me see. Okay, so type it, that conscious practices you need to do. First you need to set your clear intentions, what you are looking for. आप सच में क्या चाहते हो? And you need to first of all learn to practice gratitude. That's really important. Even if I am getting up in the morning, it's the gratitude. If my helper has made a cup of tea to me, it's the gratitude. My children are right now at this situation, they are absolutely fine. It's the gratitude. If today I wanted to go for a cup of coffee outside or I wanted to travel and I have arranged the funds at that moment, it's the gratitude, right? So whatever the present in this moment it's happening, everything is a gratitude. If I'm talking in front of you with all my senses alive, all my organs are set, all my health is perfect at this time, it's the gratitude. So thank you so much. So first of all, this is very important when you are doing the conscious practice. Okay guys, and start visualizing. Start visualizing that how you wanted your life to be, how you are understanding your life in the long run. What are you looking for? So those kind of visualization techniques is very important, where you wanted to focus on your desired outcomes. Yes or no? And then your subconscious mind की alignment बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा. उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए आपको मंत्रास क्रिएट करने हैं. Very important to create mantras, and repeatedly positive statements you need to speak.
टू रीप्रोग्राम योर लिमिटेड बिलीव्स, यू नो, जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिमिटेड बिलीव्स हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या मेरे से तो ये होगा ही नहीं, अरे मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं नहीं है, तो जैसे मैंने आगे भी बहुत बार बोला है, तो जिनी कहता है कि ओके तथास्तु, नहीं है तो नहीं होगा। तो अगर मैं ये सब बोल रहा हूं तो मुझे उसको कैसे इसको चेंज करना है, उसको लिमिटेड बिलीव्स को मुझे उन बिलीव्स को पावरफुल कैसे बनाना है, यू नो, मुझे उनकी रीप्रोग्रामिंग कैसे करनी है। तो आपको अपनी सबकॉन्शियस माइंड की mantras, you mean affirmation? Yes, Minnie. So I believe in it कि you can create your own affirmation, you can create your own mantra. So mantra आप अपना बनाओ। मैं मंत्रा वर्ड ज्यादा कनेक्ट होती हूँ रादर देन affirmation। जब हम affirmation की बात करते हैं वो बहुत ही बुकिश उसमें चला जाता है affirmation, बट जब मैं मंत्रा बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि oh my god, so mantra is for me, you know, I am changing my mantra, I am changing my mantra to make it powerful। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा मेरे हर मैसेज में या हर चीज जब मैं बात करती हूँ तो मैं बहुत एक वर्ड यूज करती हूँ, पावरफुल। कितने लोगों ने ये ऑब्जर्व किया? इनफैक्ट मैंने ये ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन मेरी डॉटर ने मुझे कॉन्शियस करवाया, आप हर चीज में पावरफुल बोलते हो। एंड इनफैक्ट एक मेरा मार्केटिंग का था जिसके साथ मैं कनेक्ट हुई पीछे, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल वर्ड यूज करते हो। देन आई रियलाइज कि एक्चुअली दैट वाज मिसिंग इन माई लाइफ and I wanted that to come into my life. Actually I made that word into my day to day life routine. हर चीज में जब मैं बात करती हूँ, मैं हर चीज में पावरफुल वर्ड को लेकर आती हूँ। And today actually I feel that power within me. Getting it? Is it goosebumps? मुझे goosebumps आ गए हैं ये बोल के। Getting it? And then how to, this is about the subconscious mind. And now how to heal your unconscious mind. अनकॉन्शियस माइंड को हील करने के लिए यू हैव टू एंगेज योर सेल्फ कंटिन्यूसली ऑन योर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी है आपको। जो दीपक आई कीप गाइडिंग यू गाइज कि गो इन टू द डेप्थ ऑफ इट, अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स, अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस, गो डीप गो डीप गो डीप every time I tell you guys, right? So that is, you need to engage yourself in those deep self reflections. Just start doing meditations, because meditations is the only way जहाँ पे आपको actually realize होगा कि where you are stuck up with. And do not forget to go to the therapist, to go to the counselors. Take those kind of sessions with them, because हम डॉक्टर पे तो जाना पसंद करते हैं बट हम इन चीज़ों पे जाना पसंद नहीं करते, and that is only important. बिकॉज अगर मुझे कुछ चीजें नहीं मिल रही हैं, हो सकता है अगला बंदा जो आपका मेंटोर होगा या आपका थेरेपिस्ट होगा वो आपको एक नया रास्ता दिखाएगा उसको ढूंढने के लिए, उस ब्लॉकेज को ढूंढने के लिए, उस ट्रॉमा को ढूंढने के लिए। तो वट एवर योर रिप्रेस्ड इमोशंस आर देयर, योर ट्रॉमाज आर देयर, यू हैव टू open those blocks, you have to heal those blocks, then only the manifestations will happen in your life. Getting it guys? Getting it guys? Interesting? Understand हो रहा है या नहीं हो रहा? Yes or no? Please type it in the comment box. Yes or no? So I am already crossing my half an hour, and my daughter has actually given me time only for 20 minutes today, and I am still talking, and she told me, Mama, please do not talk so much today, that we are supposed to go for a coffee. Okay, thank you, Minnie. Okay, so now in the last, I will just conclude this with the tip of the day. How many of you want the tip? How many of you want the tip? Now आप ये सब चीजों को करोगे कैसे? देखा फट, thank you. Okay, great. So आप इन सबको अपने जो beliefs है ना, पहले तो उनको लिखो कि आपके beliefs क्या हैं। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी कि अपने बिलीव्स को आपने कैसे फॉर्मेशन में, आपने कैसे उसको फॉर्मुलेट करना है, आपने अपने बिलीव्स को कैसे लेके आना है। हो सकता है कि बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जहां पे आपके पेरेंट्स ने या किसी ने भी, या एनवायरमेंट की वजह से आपको किसी ने पुल किया हो किसी चीज के लिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, राइट? तो आपने बचपन में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ हुआ होगा, किसी कंपैरिजन्स में कई बारी हम आ जाते हैं, किसी के कंपैरिजन में आपको बोल दे तुझे तो कुछ नहीं आता, यू कांट डू एनीथिंग, you to always fail, you do not know anything, you do not have brain, so a lot of unconsciously your parents spoken about it, which matlab they were also not purposely they have done it, but ऐसे उनका इनडायरेक्ट, जैसे मैंने बोला ना, अनकॉन्शियस एफर्ट्स हो जाते हैं। तो वहां पे आपके अंदर क्या बिलीफ आ गया? दैट आई एम यूजलेस, राइट? एंड यू हैव क्रिएटेड दैट सेल्फ डाउट का बिलीफ। सो दीज आर द बिलीव्स।
सो वो जो बिलीफ आपके अंदर आ गया, तो व्हाट यू हैव डन इज कि यू आर ओनली ऑलवेज थिंकिंग वेन एवर समथिंग इज कमिंग, अरे यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं किसी चीज में हाथ डालता हूं वो तो मेरी चीज पूरी ही नहीं होती, तो हाउ आई एम गोइंग टू बी सक्सीडेड. सो बेसिकली यू आर हैविंग अ डाउट विद इन योर सेल्फ. Yes or no? Now, how to come out of that doubt? So there are affirmations which Minnie you were talking about. Yes, it is an affirmation only, but affirmation says the statements. Okay, now you keep repeating. I am confident. I am confident. I am confident. You know, I actually worked on myself a lot. I tell you, lots. Every time I changed as my children are growing in a different stages. I was learning from them so many things. In my office, I was learning so many things. But I realized that only statement saying is not going to work for you. So what is going to work for you? I started doing unconsciously, which I was not aware of. That let me just say this, that okay, I'm saying I'm confident. Then I'm just asking myself, because अगर वो confidence की feeling मेरे अंदर है ही नहीं, वो कहीं पे है ही नहीं, वो कैसे मैं कॉन्फिडेंट बोलती भी जाऊंगी, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पाऊंगी. यू नो, ओ आई हैव लॉट ऑफ मनी, आई हैव लॉट ऑफ मनी. अरे मैंने मनी का कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, तो मैं कैसे लॉट ऑफ मनी मेरे पास आ जाएगी. ओ आई एम वेरी हेल्दी, मैंने कभी हेल्दी खाना ही नहीं खाया है, मैं कैसे हेल्दी हो जाऊंगी. गेटिंग इट? सो इस पे आपको एक छोटा सा ट्विस्ट करना है, और इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीक से बात करेंगे. आपको इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस दैट आई एम कॉन्फिडेंट, जस्ट से why am I so confident? Why am I so healthy? Why I have so much of money? Why I am so comfortable? So when you say why, you know, you are logically asking yourself. I tell you guys, mind जो है ना, mind हमेशा questioning करता है. माइंड कभी भी कुछ चीजों को, लॉजिक है माइंड बहुत ज्यादा, वो लॉजिक पूछता है, वो बोलता है तूने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो तुझे कैसे पता है. तो अब आप इसको उल्टा करके देखो, आप ऐसे पूछो अपने आप को, वाई एम आई सो कॉन्फिडेंट, एंड देन योर माइंड सेज कि ओके वाई आई एम सो कॉन्फिडेंट, क्यों हूं मैं कॉन्फिडेंट, क्यों मुझे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वाई आई नीडेड मनी, एम आई वर्थ टू गेट दैट मनी, वाई, क्यों मुझे चाहिए पैसा. यू विल गेट योर ओन आंसर्स. अब मैं इसके आगे आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि आई वॉन्टेड यू टू वर्क ऑन इट. आई वॉन्टेड यू टू वर्क ऑन इट. राइट योर स्टेटमेंट, राइट योर बिलीव्स, लिमिटेड बिलीव्स. रोज आपने क्या करना है. लेट्स डू दिस एक्सरसाइज नाउ दिस पर्टिकुलर वीक. नेक्स्ट वीक आई विल कम बैक अगेन ऑन दिस टॉपिक एंड आई विल आस्क यू वेयर आई एम एंडिंग इट टुडे. दैट जस्ट डू इट 3-3-3 मीन्स लाइक इन अ डे 3 पहर होते हैं दिन के. सुबह 3 लिमिटेड बिलीव्स, दोपहर की 3 लिमिटेड बिलीव्स, शाम की 3 लिमिटेड बिलीव्स. आपने कम से कम 9 बिलीव्स इन अ डे यू शुड राइट इट डाउन. यू नो, सो 3-3-3 के हिसाब से आप 9 अपने लिमिटेड बिलीव्स लिखिए और 9 लिमिटेड बिलीव्स की स्टेटमेंट बनाइए. वॉट एवर बिलीव्स यू आर हैविंग नाउ विच इज स्टॉपिंग यू टू हैव योर डिजायर्ड आउटकम, एंड फिर उसके ऊपर आप अपनी ये स्टेटमेंट बनाइए, क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट टू योर ओन सेल्फ, एंड सी दिस, डिवोटेडली सी दिस एंड सी द रिजल्ट. I'm sure that you will get something of the other, and I would love it if you reply it, or you will call me separately or message me if you have my number, or you message here on this platform. I would love to understand that how do you like this session, right? So any questions still here? Any questions anybody has? Guys, any questions? So thank you so much, and I think अपनी कैपेसिटीज के ऊपर मैं समझा सकती थी मैंने आपको समझाया है, और ये मैंने बताया आपको कि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. हम इसको और कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप, फॉर लिसनिंग मी, एंड आई एम होपिंग दैट यू हैव एंजॉयड इट. मुझे तब तक समझ में नहीं आएगा आप लोगों ने एंजॉय किया जब तक आप कमेंट बॉक्स में पूरे के पूरे वहां पे की पॉइंट्स नहीं बताओगे कि हाँ हमें ये सीखने को मिला आज, और अपना एक्शन आपको लिखना है. संगीता, मिनी, दीपक, whomsoever I can see right now on my front desk,
सो वो आपको लिखने हैं पॉइंट्स, प्लीज लिखो दीपक, और बताओ आपको क्या आज के लेसन से समझ में आया और क्या आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर पाए या नहीं कर पाए। तो अगले हफ्ते हम जरूर मिलेंगे और इसके ऊपर हम डिटेल में जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, इट्स इंपॉर्टेंट टू फील व्हाट यू से। थैंक यू so much. And I would love it if you can help me knowing that you guys understood. And I can only understand once when you write something there, you know. So I would love Mini, Sangeeta, Deepak, whosoever has joined today. Thank you for everyone who has joined today, and people who are watching this. Also, please write it down in the comment box that how this session is. Thank you guys. Take care. Love you.